Yes, friends, now we'll go to what? Allied angle formulae. Allied angle होता क्या है? पहले वो समझना जरूरी है. Allied angle formulae. Angles of the type n into pi by 2 plus or minus theta, where n belongs to set of integer, are known as allied angles. और अगर इसके साथ हम अटैच कर दे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, then it will become trigonometric functions of allied angle. So today we'll be learning some very useful and important formulae which you can use in physics also based on allied angle. तो इसमें दो केसेस हैं. केस वन, when n is even number, then sine of n into pi by 2 plus or minus theta will remain same as. जब n इवन रहता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल नॉट चेंज, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस थीटा ही रहेगा, tan will remain same as tan theta, cot will remain same as cot theta, sec will remain same as sec theta. Cosec will remain same as cosec theta. अब इस बॉक्स में क्या लिखना है? इन बॉक्स पुट प्लस और माइनस साइन डिपेंडिंग upon the quadrant in which angle n into pi by 2 plus or minus theta lies according to all sin tan cos. इसका मतलब अगर ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव. अगर ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉसेक विल बी पॉजिटिव. साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, रेस्ट ऑल विल बी नेगेटिव. If this angle goes in third quadrant, then in third quadrant tan and cot, these two will be positive, r will be positive, rest all negative. And if this angle goes in fourth quadrant, then cos and its reciprocal sec are positive, rest all will be negative. Now this was case 1. Case 2 is what? When n is odd number, when n is odd number, in case of odd number, sin changes to cos, cos changes to sin, tan changes to cot,
and cot changes to tan, sec changes to cosec, and cosec changes to sec theta. In box, put plus or minus sign depending upon the quadrant in which angle n into pi by 2 plus minus theta lies, according to the quadrant in which this lies. All sin tan cos. Now next very important thing is, instead of pi by 2, if it is multiple of pi, then see how it becomes very simple. If the angle is n pi plus or minus theta, इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विल नेवर चेंज, यानी साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉट सेक कॉसेक, चाहे n ऑड हो और n is even number. Only the thing is what we have to take care in which quadrant n lies. तो उसके लिए वेरी सिंपल मेथड इज देयर. इसमें भी दो केस होंगे. केस 1, when n is even, then अगर n पाई प्लस थीटा है, lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट. n इवन है तो n पाई प्लस थीटा कहां लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और n इवन है तो n पाई माइनस थीटा विल लाई फोर्थ क्वाड्रेंट. And case 2 is what? When n is odd. तो n पाई प्लस थीटा lies in थर्ड क्वाड्रेंट. n पाई minus theta lies in second quadrant. So whenever it is multiple of pi, then it becomes very easy, and you have to remember sign like this. n even है तो n pi plus theta lies in first quadrant. n odd है तो n pi minus theta lies in fourth. Sorry, n is even number. n pi minus theta will lie in fourth quadrant. अगर n odd है तो n pi plus theta will go in third quadrant, and n odd है तो n pi minus theta will go in second quadrant. So it makes very simple and you can remember very easily. इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड. एक बहुत एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेनी टाइम्स दे आस्क प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैट, तो उसको भी देख लेते हैं. cos theta, cos 2 theta into cos 2 square theta into cos 2 cube theta and so on into cos of 2 raised to n minus 1 theta. This is nothing but 2 raised to n sin theta into sine of 2 raised to n theta.
this is the formula for cos theta, cos 2 theta, cos 2 square theta, and so on. It is ending up to 2 raised to n minus 1. So sine will have 2 raised to n theta upon 2 raised to n into sine theta. I'd like to explain the proof how it has come. Consider cos theta into cos 2 theta into cos 2 square theta cos 2 cube theta into cos 2 raised to n minus 1 into theta. In this case, we'll multiply divide by 1 upon 2 sine theta. So it will become 2 sine theta cos theta into cos 2 theta cos 2 square theta cos 2 cube theta and so on, cos 2 raised to n minus 1 theta. वन अपॉन 2 साइन थीटा, अब ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अंदर ले लेंगे, इनटू आउटसाइड क्या है कॉस 2 स्क्वायर थीटा cos 2 cube theta and so on into cos 2 raised to n minus 1 theta. फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 upon 2 into 2 is what 2 square, साइन will remain as it is और ये बन जाएगा 2 sin 2 theta cos 2 theta into cos 2 square theta into cos 2 cube theta and so on into cos 2 raised to n minus 1 theta. Now this will become sin 4 theta, which is nothing but sin 2 square theta. 1 upon 2 square sin theta, अभी हो जाएगा sin 2 स्क्वायर थीटा और ये cos 2 स्क्वायर थीटा साथ में ले लो इंटू cos 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन इंटू cos 2 raised to n minus 1 थीटा. फिर से मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो इट विल बिकम 2 क्यूब साइन थीटा and this is what 2 sin 2 square theta into cos 2 square theta into cos 2 cube theta cos 2 raised to n minus 1 theta. So this is what 1 upon 2 cube साइन थीटा, अब ये हो गया तेरा साइन 2 क्यूब थीटा इंटू कॉस 2 क्यूब थीटा एंड सो ऑन कॉस which is what 1 upon 2 cube साइन थीटा. अब यहां 2 क्यूब है 2 क्यूब है, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस सॉरी साइन 2 raised to 4 एंड सो ऑन. लास्ट में है cos 2 raised to n minus 1 theta. If we proceed like this, then last में क्या आएगा 1 upon 2 raised to
n minus 1 sin theta. If you proceed like this, so many steps will be there. और ब्रैकेट में क्या आएगा? sin raised to 2 sin of 2 raised to n minus 1 theta into cos 2 raised to n minus 1 theta. फिर इसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 raised to n sin थीटा, और ये बन जाएगा 2 sin 2 raised to n minus 1 theta into cos 2 raised to n minus 1 theta. Which is nothing but one upon 2 raised to n sin theta, and this will become sin 2 raised to n theta. Sin 2 raised to n theta upon 2 raised to n sin theta. So this is very important formula. Sometimes asked only up to cos theta cos 2 theta into cos 4 theta. You can use this formula. Okay? According to formula, this will be what? Up to 2 cube है. Sorry, 2 square. So it will be what? Sin 2 cube theta upon 2 cube into sin theta. This is the final answer. Then sin 8 theta upon 8 sin theta. So we can have a lot of problems up to 4 theta, 8 theta, 16 theta. Then you can apply this formula to get this. So this is one of the very important formula for MCQ point of view. Thank you very much.